वेलकम टू आर गपशप अड्डा दोस्तों एट विजडम ऑन द रॉक्स। मैं हूं सिप्पी। प्लीज मीट माय गपशप पार्टनर सतीश। नमस्कार दोस्तों। सो एक्चुअली ये हमारी पहली शूटिंग एक्सपीरियंस है। ये हमारे पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं फॉर आवर चैनल एंड आई होप नॉट द लास्ट वन। एंड लाइक बिलीव मी दोस्तों, जितना डिफिकल्ट कैमरे के सामने हर चीज़ करना है, ऐसे तो हमने बहुत सारे बकवास किए हैं, बहुत सारे फालतू चीज़ें साथ में की हैं, लेकिन कैमरे के सामने वही फालतूगिरी करना इज ऑल्सो वी फेल्ट लाइक रियली टफ। So hats off to those who's doing on daily basis and जिनका ये career और profession है, so hats off. So yeah, let's begin. Let's begin. Okay, perfect. So आज का हमारा टॉपिक है AI. Okay. How AI is impacting in our lives, like presently or future. So what do you think, Satish? So the impact of AI, right? हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ को कैसे AI इम्पैक्ट करता है या करेगा। So I think बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि AI जस्ट अभी आ जाया है, कर आया है, या फिर जब से ChatGPT आया तब से आया है। ट्रूथ ये है कि ये AI हमारी लाइफ को इफ नॉट मोर एटलीस्ट लास्ट 20-30 सालों से इम्पैक्ट कर रहा है। अलग अलग फॉर्म्स में। ओके। पहले वो इतना एपरेंट नहीं था। लोगों को लगा कि AI क्या है, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब वो एपरेंट नहीं होता है, लोग उससे डरते नहीं है। अभी बिकॉज AI हैज बिकम लाइक डेली रोजमर्रा का बात हो गया है। आप यूट्यूब खोलो तो AI, न्यूज खोलो तो AI, अखबार खोलो तो AI। तो लोग उससे डर भी रहे। देयर इज अ पार्ट जहाँ पे कि पीपल आर स्केयर्ड ऑफ AI एंड बहुत सारे लोग उस AI के लिए उत्साहित भी हैं। They are seeing new opportunities in AI. So coming to the fact कि कैसे impact करता है, और let's assume that the question is about कि current जो अभी नया AI का वेव आया है, ChatGPT, Midjourney. I mean these are actually company specific terms. ChatGPT is not a technology. ChatGPT is what the name the company has given. जो टेक्नोलॉजी है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो LLMs हैं फॉर लैंग्वेज के लिए। आपको अगर टेक्स्ट टू वीडियो करना है, टेक्स्ट टू नॉट वीडियो, इमेज करना है, तो उसके लिए मिडजर्नी है, DALL-E 3 है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जब आया है मार्केट में जब से, तो इट इज अ फैक्ट कि लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हुई है। जितना पहले जो इम्पैक्ट हो रहा था वो बहुत ग्रेजुअल था, एज एंड व्हेन एक नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी धीरे धीरे, और जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन जब से ChatGPT आया, उसके DALL-E उसके पहले आया था, उस सब कुछ टाइम पहले DALL-E 2 आया था, अब DALL-E 3 आ गया है, Midjourney आया है। ये लोगों को रातों रात इम्पैक्ट किया। टू गिव एन एग्जाम्पल, ChatGPT आते ही ऐसी कई सारी जॉब्स हैं जो कि अब मंडेड हो गई हैं, नॉट रिक्वायर्ड हुई हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रिक्वायर्ड है भी तो जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे अब वो 1 या 2 लोग कर लेंगे। यहीं पे मेरा कंसर्न आता है, लाइक मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि जैसे तुमने खुद बोला कि बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट होगा, जॉब एंड अपॉर्चुनिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट होंगे। फिर कंपनीज को शायद अभी 100 लोगों की जरूरत है, फिर डाउन द लाइन बिकॉज ऑफ AI मोस्ट ऑफ स्टफ मशीनें करेंगी या सॉफ्टवेयर करेंगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली दे गोना कट शॉर्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड वहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को फायर भी कर किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मशीनें कर दी हैं। सो देखिए, ये जो कंसर्न है कि AI या फिर टेक्नोलॉजी इन जनरल लोगों का जॉब खा जाएगा, इट इज ट्रू ऑल्सो एंड फॉल्स ऑल्सो। ये जो कंसर्न है कि मशीन्स लोगों की जॉब कम कर देगी, ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट नहीं तो 100 साल से है। जब पहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी और जब इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस असेंबलिंग से कार, आपके पास रोबोटिक आर्म से जो कार असेंबल कर रहे थे, तब से लोग सोच रहे हैं कि वो अब अगर रोबोट्स आएगा तो मेरा जॉब क्या होगा। इट इज ट्रू कि कुछ लोगों के जॉब इम्पैक्ट होंगे, जॉब लॉस होंगे, जो लोग वो काम में इन्वॉल्व थे जिसको कि अब
AI टेक वर्क करने का, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. व्हाट विल हैपन कि आपका जो जॉब है, जॉब मार्केट जो है वो शिफ्ट होगा एक जगह से कहीं और. जहाँ से शिफ्ट हुआ, अगर वो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे टू अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग, they will lose their job, they will struggle. If they can transform to how we do things now in a new way with AI, अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, they will still be employed. And overall अगर आप देखोगे लास्ट 10, 20, 50, 100 सालों में जॉब्स तो बढ़ेंगे ना. इवन दो वी हैव टेक्नोलॉजी, जो काम हम पहले कोई अगर डेटा एक्सेल में फिल करता था, कर रहा है, भी करते हैं बहुत सारे लोग. अगर मैनुअल आदमी उस मैनुअली उसको अगर जो 2 दिन में करता है, AI कैन डू दैट इन 10 मिनट्स. या फिर इन बिटवीन में बहुत सारे टूल्स हैं थे जो कि उसको फास्ट करते हैं. तो टूल्स, टेक्नोलॉजीज आर वे टू इम्प्रूव आवर वर्किंग. इट डजंट टेक अवे जॉब एज सच. वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और नए जॉब्स क्रिएट करता है. कुछ जॉब्स जाते हैं, नए जॉब्स आते हैं. Okay, fair enough. Like for example, Tesla, right? Yes. Fully automatic car launch कर रहे हैं. They are also planning to implement in India as well. जो अभी की government है, they are not kind of keen to take up that. But let's say अगर सही में fully automated car अगर implement होती है, not even Tesla, other companies also, let's say future, जो लोग बहुत सालों से, हो सकता है कितने सारे लोग हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन ड्राइविंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और रातों रात आप बोलो कि नहीं अब आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप कार नहीं चला सकते, हमारे पास फुली ऑटोमेटेड कार है, यू नो. सो वो इंसान क्या करेगा? आई नो यू आर टेलिंग कि आप अदर स्किल को डेवलप करो, अडॉप्ट करो, बट उसके लिए आपको उनको अपॉर्चुनिटी भी तो इक्वली देनी चाहिए जहाँ पे वो कुछ और सीख सके. अब जब थ्रू आउट योर लाइफ अब तक आप ड्राइविंग करते आए हो एंड सडन से आपको बोला जाए कि नहीं आपके पास वो जॉब है ही नहीं, तो हाउ यू गोना फील, हाउ यू गोना सस्टेन? सो सी, हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते. आइडियल वर्ल्ड होता है जहाँ पे हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए. नेचर वैसा है नहीं. नेचर में स्टार्टिंग से रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो अपने आप को फिट रख पाया, अपने आप को किसी और की जरूरत बना पाया. अगर आपको किसी और को आपकी जरूरत है तो आप काम के, अगर आप नहीं हो, सो यू कैन फील बैड, यू कैन फील सिंपैथी, बट यू कांट रियली हेल्प इट. आप टेक्नोलॉजी को की वेव को रोक नहीं सकते, कभी नहीं किया. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जो 20 साल से ड्राइविंग कर रहा है, लीव अलोन जनरेशन को खुद ही कर रहा है, उसको वही आता है. That's the only skill he knows. कल को अगर मार्केट रातों रात नहीं हो रहा, मान लीजिए रातों रात अगर सारी ऑटोनोमस कार्स का लाइसेंस है, these people will sure lose job. There's nothing else we can do about it. The only way is to do कि हाँ, अगर कल को टेस्ला या फिर कुछ जैसी कंपनीज मार्केट में कोई फैल जाती हैं, सारी कार्स ऑटोनोमस, इवन प्राइवेट कार्स, पर्सनल कार्स, ड्राइविंग इज गॉन फॉरएवर. ठीक है, लेकिन ये जो ड्राइविंग की जॉब जाएगी वो जाएगी, लेकिन उसकी जगह पे आपको कुछ और जॉब्स क्रिएट होंगी. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल वो जॉब क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? गवर्नमेंट की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है. किसी जॉब, ये जो लोग बोलते हैं कि जॉब क्रिएट करने का, कोई जॉब क्रिएट नहीं करता है. जॉब क्रिएट करता है मार्केट. गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट अ जॉब आउट ऑफ नोवेयर. अगर उसकी डिमांड नहीं हो, उसको आप सस्टेन नहीं कर पाओ. अगर गवर्नमेंट जॉब क्रिएट भी करती है, जो कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ जॉब. जो गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट जिसमें कि जॉब आ पाए. अगर गवर्नमेंट खुद जॉब क्रिएट करती है, वो सस्टेन नहीं होती है. So, जैसे तुमने बोला कि मार्केट जॉब क्रिएट करती है मोस्टली, राइट? मार्केट भी तो डिपेंडेंट है कंज्यूमर पे, कस्टमर्स पे. That is what market is. Yes. So consumer companies overall अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे कि नए स्किल्स, नए जॉब्स की जरूरत है, नए जॉब होंगे, नए जॉब बनेंगे. If the market is growing, if the economy is growing, नए जॉब आएंगे. If the economy is such that economy is shrinking,
लोगों के पास पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए, बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए एनवायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती है बिजनेसेस को फास्ट ग्रो करने में, जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट डजंट हैव, आई पर्सनली बिलीव कि गवर्नमेंट शुड रन नो बिजनेस, दे शुड नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एनी कंपनी, इट्स नॉट देयर जॉब टू क्रिएट जॉब, देयर जॉब इज टू क्रिएट द राइट एनवायरमेंट जिससे कि जॉब क्रिएट हो, वो वही लॉन्ग टर्म में करता है सिस्टम। Short term, you can create job, you can put a company, you can give 1,000 to few jobs to few thousand people. It will not sustain. So जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लाइक सो कॉल्ड इज कोटेड एज अ गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो बैंक्स में हो या फिर पुलिस, रेलवे, यू नो दोस टाइप ऑफ कैटेगरीज। हाँ, so there are some jobs जैसे कि मान लो गवर्नमेंट को रन करना है, and government also needs bureaucrats, वो बोलते हैं bureaucrats. तो that is obviously government job, वो तो उनकी ऑफिसेस हैं जहाँ पे बाबू लोग बैठते हैं, जो भी बैठते हैं। तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल चाहिए, वो अलग जॉब है। बट आप बोलो कि गवर्नमेंट कल को एक स्टील फैक्ट्री लगा दे, आई डोंट सपोर्ट दैट। वो स्टील फैक्ट्री आफ्टर 10 to 20 years शट डाउन, क्योंकि हमें सामने देखा है इंडिया में या कहीं भी, वी हैव सीन बिगर इकोनॉमीज शटिंग डाउन बिकॉज गवर्नमेंट ओन कंपनीज डू नॉट डू वेल, दैट्स अ गिवन फैक्ट। एयर इंडिया के साथ जो हुआ, एंड ऑफ द डे इट वाज टेकन ओवर बाय टाटा। यस, और भी इंडिया में पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी और गवर्नमेंट ओन करती थी, धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया है एंड चीजें बेटर हुई हैं। रेलवे का भी बहुत सारा पार्ट हो गया है प्राइवेटाइज। विद माय ओन एक्सपीरियंस गाइस, passport is the biggest example, you know. We have 4 states Exactly. पासपोर्ट ऑफिस में। आई यूज्ड टू रिमेंबर बैंगलोर में जब मैं ऑफिस जाया करता था बहुत पहले, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ये लंबी लाइन, Exactly. सुबह से, बिफोर इवन द ऑफिस स्टार्टेड, राइट। With my own experience, Yeah. मेरा खुद पासपोर्ट, you know, I stopped counting how many times मैं पासपोर्ट ऑफिस गई थी, 3 बार। For silly reason, वो जो so called last stage में जो बाबूस टाइप लोग आते हैं ना, they have declined, मतलब literally बोले नहीं, I cannot granted this. I was like, why? Because see those type of, you know, colleges and all, हम लोग क्या बोलते हो, आप पीजी में रहते हो, हॉस्टल्स में रहते हो, वी आर ऑल्सो लाइक, यू नो, एज अ स्टूडेंट वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ इमिग्रेंट, राइट, इन आवर ओन कंट्री। सो वहाँ पे हर चीज आपको, यू नो, जस्ट टू प्रूव दैट आपका रेसिडेंस कहाँ है, ये कहाँ है, वो मैच नहीं कर रहा, वो मैच नहीं कर रहा, दे नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट पॉसिबल फिजिकली, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आप घर छोड़ के आप बाहर जाते हो कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने, आप हॉस्टल में हो, तो यू नो फॉर सिली रीज़न मेरा खुद का 3-4 बार, यू नो, रिजेक्शन हुआ है पासपोर्ट, एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज उस टाइम पे आप, यू नो, कॉलेजेस में आप बंक मार के जाते हो, या फिर आप जब काम करते हो तो भी आपको छुट्टी लेके जानी पड़ती है कि नहीं, दिस इज द मेन वर्क, आई हैव टू गो। सो या मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन आई हैव एक्सपीरियंस दैट चेंज, जब वो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब टाटा ने टेक ओवर किया, initial stage but still the last stage अभी भी, from what I know कि पहला 2 stages टाटास में TCS, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह करते हैं प्रोसेस, एंड दैट रन्स वेरी स्मूथली, yeah, and including your fingerprints and eye capturing and all those that, like literally all the documentation and your data collection part is done very smoothly. Yes. They are kind of sometimes smiles also, like friendly environment. yeah, But last stage still scary. it's still, yeah, I mean because the last का 2 states है वो they're still I think governed by Yeah. the government employees. Yes. उसमें they still sometimes do their They try to show their power. The problem with government employees is this, right? The way government organizations are structured is that there is no incentive to excel. You will get a promotion after a certain number of years. सब लोगों का एक पे कमीशन है, एक ग्रेड है, सब कुछ होता है कि आप अभी इस ग्रेड से उस ग्रेड में मूव हो गए, सब लोग साथ में मूव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप ग्रेट जॉब कर रहे हो, हाँ। सो आपको जल्दी एक्सेल का मौका मिलेगा, नथिंग लाइक दैट। प्राइवेट में क्या होता है कि you have to prove yourself better than the other guy to get a better outcome. So there is a incentive to go beyond your maybe your normal work description. गवर्नमेंट में है कि वो जितना है डिस्क्रिप्शन उतना भी नहीं करना चाहते हैं। They go with that mindset कि chillax. So I mean I think we are going a bit far Off from track. Yeah. our topic Okay. which was AI. But yeah, the truth is that
private government doesn't have any, I think, any role in creating jobs. They have a role in creating the right environment for jobs. So what do you mean right environment? Like उसमें आप मतलब how do you see कि right environment क्या हो सकता है? राइट एनवायरमेंट ये होता है कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हो. सो वी हैव सीन दिस शिफ्ट इन इंडिया, राइट? इंडिया इफ यू गो बाय 5-10 years बैक, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर नहीं था. ठीक है, कुछ एक इक्के दुक्के थे स्टार्टअप, बट इट वाज डिफिकल्ट टू क्रिएट अ कंपनी एंड ग्रो इट. व्हाइल पीपल यूज्ड टू रेफर टू सिलिकॉन वैली में कितना इजी है एक स्टार्टअप लगाना और उसको ग्रो करना, इंडिया में नहीं था. बिकॉज ऑफ व्हाट? द पॉलिसीज. वो पॉलिसीज आपको स्टॉप करती हैं या फिर एटलीस्ट स्टॉप नहीं करती है तो आपको इतना डिफिकल्ट कर देती है नए कंपनी को सेटअप करना. जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सपोर्ट नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से. दे ट्रीट द स्टार्टअप ऑन द सेम लेवल एज एस्टैब्लिश्ड कंपनी. स्टार्टअप को थोड़ा चाहिए होता है सपोर्ट, वो सब नहीं था. सो इफ यू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जहाँ पे इंडस्ट्री थ्राइव कर पाए, देन दैट्स द एनवायरनमेंट वी नीड. Then you have to leave everything else on the market. Jobs will come by itself. ऐसा नहीं कि इंडिया में जब IT बूम आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया. It was the market. Marketing. It was a market demand. US में IT skills were much more costly. इंडिया में हमारे पास लोग थे, much cheaper लोग थे, labor was very cheap. It was market driven. कंपनियों ने सोचा कि yes we can use this opportunity. Companies like TCS and Infosys उस समय did grow. So it grew organically. We cannot think कि हमारे पास right environment है so the government should create an idea. ऐसा नहीं होता है, वो कंपनी नहीं चलती. So that's why I was saying कि government should not get involved in directly creating the job. Like for example, again I think we're going way far away from our topic, but just I think maybe last point, Make in India. Make in India is an initiative by the government to create the right environment so that the companies can come to India and manufacture in India. It's not the initiative जहाँ पे कि government खुद कुछ manufacture करे. That is what it should be. Yeah, so I think going back to our topic. Okay, so I also just wanna understand. You are from, you're being a technical guy. हमने सुना है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति. Now seems like this is ChatGPT क्रांति, So why everybody is talking about ChatGPT? So why everyone is talking about ChatGPT? ठीक है. So ChatGPT ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि ChatGPT the next 5-10 years ChatGPT रहेगा. This technology will stay. ChatGPT is from OpenAI. Well, I personally believe that there will be other companies who will catch up or already there in that. Google या फिर there is a company called Anthropic. उनके models में से कोई है क्या कोई नया company ChatGPT को पीछे करेगा. ठीक है. So ChatGPT I think as of now common man के दिमाग में है कि AI मतलब ChatGPT. ChatGPT is something like अगर Photoshop करना है तो Xerox. Xerox like just a company. The technology was Photoshop. Photoshop will remain. Xerox might go away, Canon and come, the other company other. So ChatGPT will probably fall away. They were the first one to come. सबके दिमाग में इसलिए आया because उसके पहले, like I was saying पहले कि AI was impacting us slowly in a gradual way. Subtle था. अभी क्या है? रातों रात जब GPT-3 आया पहली बार, you could difference आप देख सकते हो. and some Yes. the difference was that anybody can use it. Right from a school kid to somebody who all you need is just a laptop or maybe a phone जहाँ पे कि आप उस ChatGPT या chatbot या agent से आप communicate कर सकते हो. And we could see things that we had never seen before. Chatbot बहुत पहले से था, like बहुत सारी companies के website. But even I feel like chatbot भी it was a kind of frustrating thing most of time because जो हमको answer चाहिए वो चीज़ वो वापस से response नहीं करते थे. They were like typical automated version of things. But ChatGPT you won't feel like कि कुछ automated आ रहा है. Yes. Sometimes you feel कि थोड़ा out of context reply आ रहा है, but that even I know. You should also be expert or not expert, at least you should know how to use ChatGPT.
Yeah, so ChatGPT also has evolved over the last year or so. The first version was GPT-3, I mean, behind the scene technology. Or that itself was amazing because it could write you a poem. Right. I could actually give it a snippet of code, मेरा code book ही out of nowhere था, मैं बीच में उठा के output, and it would explain me कि मैंने खुद क्या किया, even though it did not have context. So, and it could write articles, it could summarize things, क्योंकि पहले कोई नहीं कर रहा था. Chatbots were more like, you could feel you are talking to a bot. But Well, but when you speak to ChatGPT or large language models, you wouldn't know. You would feel like you are talking to a human. And that is the whole point of this large language models. It should be so natural to us as humans that we should feel that we're talking to another human. So जब ये आई GPT-3, it was simply sometimes it was giving you out of context answers, but it has improved over the improvement came very fast. 3.3 आया, फिर GPT 3.5 आया, फिर GPT 4 आया, right now we're at 4. I think that आपको तो जैसे every version क्या क्या major changes हुए इस सॉफ्टवेयर में? So changes as the underlying technology was exactly same. I mean, I'm not going into technical details to be used transformers, but the underlying technology was same. The difference between 3 and 3.5, 3.5 and 4 is bigger hardware for these models to train. That means उनके पास ज़्यादा power था उन models को train करने के लिए, और अगर ज़्यादा power था that means they could use bigger data. और ज़्यादा data पे उन्होंने अपने आप को train किया. And they had larger number of parameters. Parameters को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर humans में brain में neuron है, तो depending on how many neurons you have, आपकी intelligence to some extent उससे होती है decide. आपका brain में कितने neurons हैं, कितने neuron है. Similarly, अगर आपका large language model है, उसमें कितने parameters से हुआ है train, इतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा स्मार्ट होगा. Now, I think OpenAI ने कभी ओपनली रिवील नहीं किया कि उनका GPT-4 कितने बिलियन पैरामीटर्स पे है, but we can assume कि it is in at least around trillion parameters, because we have already seen open source large language models that are trained on 50 billion, 70 billion parameters, and they are nowhere close to GPT-4. Okay. So जितना now we have the technology to have पूरा इंटरनेट का जो डेटा है जो अवेलेबल है उसको अपने में संभालो. सो GPT-4, GPT-3 and GPT 3.5 यही डिफरेंस था. The amount of data that they were trained on, that time that this company gave that model to train on. Basically just like ज़्यादा समझदार है. GPT-4, GPT-3 से ज़्यादा समझदार है. उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसको ज़्यादा ट्रेन करना है. क्योंकि बाय दैट टाइम आई एम श्योर इतने हेवी यूजर्स उसके पास आ चुके होंगे डेली बेसिस. Tons of people they are using it with software platform. तो उनके पास I'm sure heavy data कलेक्ट हुआ होगा to do analysis. उस पे वो और mining करके उसको better बना सकते हैं. So obviously yes, this is also one thing. As we are using it now, जैसे आप ChatGPT यूज करते हो, कभी-कभी you will feel कि the answer was not as per your comment. Right. It gave you something else, or maybe उसने तुम्हारा question नहीं समझा properly. Then you will ask this to regenerate the answer. Right. There's even an option to like and dislike answer there. So on that also they train. Okay, this answer was not good enough. Right. So what was the next answer? So ये जो data जो उनको रोज मिल रहा है, every second मिल रहा है, outside millions of users से मिल रहा है, that is going to make GPT, large language models, this AI, more and more smarter. And I think the ultimate aim is to reach AGI, which is like absolute like human level intelligence. That I'm not sure kitne saal hum aage piche hain. Maybe in the next few years we'll get there. So that will be like AI that is as good as human. We are there. We are almost there. Okay, so मेरा एक और भी concern है, like in a technical field, especially technical field, let's say every like 2 to 3 years now, at least before it was kind of 5 years. One technology used to sustain in the market. Now, like every 2 to 3 years, the one technology is coming and vanish, and the other is taking place. Like
quite long time before, let's say around 2010 or during 2015, if I'm not wrong, Hadoop was quite a big thing, Hadoop, big data. Now Yeah. nobody's talking about that. Now everybody's talking about AI. So as a, in technical field or as a technical guy, how do you see the hardship to always keep on updating yourself and keep learning the new technologies? How it is difficult? The दुखती big, लगती है I know. Anyway. Yeah, so like you said, like I think Yeah. 2010 came around, Hadoop was like the big thing. Hadoop slowly died. Exactly. Uh, As a क्यों हुआ? But again, here also ऐसा इसलिए हुआ because technology evolved. ठीक है? उस समय के लिए Hadoop was the cutting edge. जो चीजें हम पहले नहीं कर पा रहे थे, specifically unstructured data as in emails या normal text, phone and all, phone calls, इनको Hadoop was able to handle unstructured data को. उसके पहले हम Like that parameter, large pool of data. Yes, and unstructured. जब तक data tables में है properly, neatly, fitted in, we had tools for I don't know last 20, 30, 40 years to use that. But unstructured data जो कि बहुत था, most of the data in the world is unstructured. हम वो बात कर रहे हैं, it's a data. To be honest, recording हो रहा है हमारा audio. Right. We are giving this content to YouTube But platform. traditional जो tools थे, traditional जो RDB में चला वो they could use this data. Hadoop वहाँ पे आया. It could handle unstructured data, so it was a big thing. And then suddenly companies are, oh, हमारे पास तो इतने टेराबाइट्स का डेटा है, गीगाबाइट्स का डेटा है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है. We can maybe get something out of it, and we can get ahead of our competition. तो वहाँ पे Hadoop आया, but now Hadoop also evolved. Hadoop was still slow compared to what we have now. Hadoop के बाद Spark आ गया, Spark के बाद और चीजें आई. So Hadoop, in a way, like you would say कि Hadoop was the first thing in that field. But अब उसके evolved version आ गया. So now you can say Hadoop is dead, but that field is not dead. We call that field now data engineering because we don't know Hadoop anymore. When we do some companies. Now it's combined with Yeah. other technologies. So we don't in the one bucket now. Yeah, data engineering is you're engineering the data, which is what Hadoop was doing in a way. So that technology still remains. That term, that specific tool, has fallen away. Some maybe older companies are maybe still using it because उनके पास तो already built up था, but in general it has moved away. Yeah, but now obviously Hadoop is no longer the one. Because what? You will not get a job just because you have one university. 8 times ago it was आपको मिलता, आपको बहुत संदिग्ध उसके लिए. तो so technology में यही है, especially when I say technology I mean digital technology. जो फिजिकल टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए मशीन वगैरह है, उसमें इवोल्यूशन बहुत स्लोली होता है. It's an ironic kind of thing. It takes years to build something better. So as a human being, how is difficult to match with that pace? That always you have to keep updating yourself and You have to Go with keep the flow. updating, you have to keep evolving, you have to keep learning. So, like for example, my own example, I did learn Hadoop, then I moved to data science because I saw that slowly it is falling away, and my own interest was there. So I moved to data science. Now, लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि data science will fall over there, and after IT jobs in general will be gone. I saw, I don't know who the guy was, but he was saying that next 5 years no coders. Okay. Then I also see another video from Nayak Murthy. He said that absolutely no way. Machines रहेंगी, AI रहेगा, but human brain जो कर सकता है वो AI नहीं कर सकता है. So coders will be there. Into video, right? So sometimes even I feel मैं कर रहा हूँ अभी in my work as a data scientist. Will AI replace it? Now to be honest, AI is what? Right? हमने ही बनाया उसको, right? और हमारी जॉब खा जाए. You will feel good about it. But you will have to be pragmatic. AI उन चीजों को ले जाएगा जो कि repetitive हो. से मेरे काम में sometimes I think
tons of data, and I have to go through it, I have to clean it, I have to figure out what are the anomalies. उस डेटा में जो hidden trend है उसको देखना है, उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. मॉडल बिल्डिंग वगैरह takes like 30% of time, which is the fancy work of what we do. But the manual labor वाला जॉब है वो हमारा रहता है 70-80% टाइम, right? Any other engineer today. That part definitely they are with it. Because the whole point is that कि आपके काम को वो आसान प्रोडक्टिविटी बढ़ा है. Yes. So जहाँ पे जिस कंपनी में पहले 10 थे मान लिया एलिजिबल, वो सारा 3 से कम बन गए because this all tedious work is being taken care by some AI tool. But उसको ओवरसी करने के लिए वेस्टिंग नहीं रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए वेस्टिंग नहीं रहेगा. कोडिंग, जो कोडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल आईटी कोडिंग, किसी का वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, जो काम पहले 10 आईटी डेवलपर्स कर रहे थे वो काम मे बी 2 या 3 लोग कर लेंगे. ठीक है. सो यू फील कि ओ मे बी देयर इज अ जॉब लॉस्ट हियर. 10 की जगह पे 3 लोग कर रहे हैं, 7 लोग काम कर. ठीक है. बिकॉज वी आर नॉट असिस्टेंट्स. बट जॉब लॉस ऐसे नहीं होता है. वो 7 लोग जो कम हुए ना, दे विल गो समवेयर एल्स. Because now we have new fields, new type of companies जो कि पहले exist नहीं कर रहे थे. If you would notice now, I think Instagram, YouTube, बड़े ऐसे जो कि लोग बैठ के वो क्या बोलते हैं, new AI tool, this, do you know this, AI can do this, do you know AI can do that. हर दिन मार्केट में एटलीस्ट 5 कंपनीज आ रही है, न्यू कंपनीज AI की, जो कि AI को यूज कर रहे हैं. बैकएंड में से टेक्नोलॉजी है, दे आर प्रॉब्ली यूजिंग ओपनएआई का ChatGPT या कोई मिडजर्नी. बट फ्रंट एंड में आपको कैसे पैकेज को दे रही है जो कि आप यूज करता हो, उसके लिए आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट 1000 कंपनी तो होगी लास्ट मंथ साल में. यू आर सो कंफ्यूज. इफ आई हैव टू गो ऑनलाइन एंड चेक कि मेरा कोई ये काम है, is there an AI to do this? If I search, I find 10 results, and I wouldn't know which one to do because सब no one is saying that. तो लोग ये देख रहे हैं कि there are some job losses, there are some types of job which are becoming redundant, like graphic designer, logo designer, जो कि पहले you couldn't do, right? The thing of dyeing, journey, they are very good at it, exactly. right? But then these new companies that did not exist, this new kind of roles that did not exist, you can call it AI automation. चीजों को automate करना using AI. So जो इस ecosystem के around जो companies evolve हुई हैं last 1 year में, I have lost count of it. Other than cleaning jobs, there is a job, there is a role for IT there also. ये जो पहले जो mundane work था, जो कि manual work था, बहुत ज़्यादा coding करने का ना, वहाँ से जो लोग हटेंगे, अब वो लोग खुद अपने आप को वहाँ प्लेस कर पाया नहीं पाए, वो उन पे करता है. बट जहाँ पे 7 जॉब लॉस हो रहे हैं, नेसेसिटी नहीं करना है, कहीं और 10 जॉब क्रिएट हुए थे. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गो फ्रॉम दिस टू दैट. कभी क्यों आ रही जॉब्स का we are talking about mostly, let's say, IT related stuff. Yeah. How about non-IT? जो लोग non-IT field में हैं, उनके लिए AI is beneficial or still scary thing? Again, I mean, it depends on how you look at IT. अगर आप IT से डर के हो तो yeah, definitely scary for you. It will, crush you. But if you are willing to use that IT, use that AI to, better yourself, then it's asking. If we are talking about, say, non-IT, let's talk about creative fields. Creative fields, I think they are the ones जो कि सबसे ज़्यादा impacted हुए हैं. AI क्या? AI revolution से, ठीक है. Let's talk about say writers. अब जैसे भी पहले अगर अखबार हुआ, नॉवेल हुए, उनको लोग manually they used to be like any record, I forgot the term, copyright या फिर कुछ और term होता है जो बकायदा चेक करता है कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कहीं पे,
ये काम पहले लोग मैनुअली करते थे, ठीक है, spelling Before going for print or something. Yeah. Even after proofreading, because it's called proofreading. So Achha. proofreading was done manually by a human. ठीक है? That job was gone, I think, if not more, 5 years back. Nobody was talking about it because proofreading के लिए tools available now. And it obviously does a much better job because human can still miss something. Right. AI will not Depend miss. on your mood. Yeah. And of course, you have to focus. There's quite a few things. Human is still prone to mistakes. Right. Tools are not. तो वो जॉब तुझे लगता है कि 5-10 साल पहले गायब हो गया, बट नोबडी स्पोक अबाउट इट. वो उस पर कोई हाई कवर नहीं हुआ. इट वाज जस्ट अ इवोल्यूशन, राइट? पहले हो सकता है कि वही जो ह्यूमन थे दे स्टार्ट यूजिंग सम बेसिक टूल टू यूज कर अपना काम को आसान करने के लिए. धीरे धीरे वो टूल इतना स्मार्ट हो गया कि आपकी जरूरत नहीं है. सिमिलरली नाउ अभी क्या है कि जस्ट दैट कि इतना फास्ट आए ट्रांसफॉर्मेशन कि लोगों को डर लग रहा है. नाउ देयर आर आई थिंक पब्लिशिंग हाउसेस जो कि उन्होंने अपना स्टाफ को कट कर लिया, राइटिंग स्टाफ था, because now they know they can use this tool to actually kind of create articles. So yes, there's a job loss there, right? I give an example कि even graphic designers, logo designers, ये जो लोग हैं artists, right? Even to some extent photographers. AI can create realistic photos. Yeah, exactly. I've seen somewhere that they have taken reference with the LinkedIn as your normal original photo versus if you want to create some business look or something. It was like the amazing job. You cannot believe that this is me. Yeah, and if you have a photographer, how much will you charge? Exactly. But if maybe you will spend $10 for that subscription and then you can get that different look, different photograph. Not just that, AI can create models. You wouldn't need models to do modeling anymore, except for ramp walking. But जितना भी प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉडल्स ऑफ पोजिंग टू फॉर सर्टेन पोज, यू कैन डू दैट इन एआई. तो वहाँ भी तो मॉडल्स की जो पहले जो थोड़ा बहुत अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी वहाँ से भी वो भी तो लूज हो गई फिर. That is a given fact. We are agreeing that there is a loss of job in traditional fields to be as of now exist करती है. These people, unfortunately, there will be people who will be impacted, but there will be more opportunities somewhere else. As a human, you have to be ready for that move, that transformation, because you can't really stop it. अगर आ गया है मार्केट में कोई रिवोल्यूशन, अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया है, it is only gonna get better. Yeah, it's only gonna get better. You cannot ignore and sit idle. I wouldn't say these jobs will vanish completely. Writers will still be there, but like पहले जो काम 10 लोग कर रहे थे, because एक मार्केटिंग एजेंसी है, they need to write marketing data marketing आर्टिकल टाइप का, अब पहले 10 लोग कर रहे थे वो काम, अब नहीं ठीक है तुम लोग कर लेंगे. मोस्ट ऑफ वर्क विल बी डन बाय एआई. ह्यूमन विल ओवरसी क्या किया वो सही से किया है. So that is where the job will be. Even same with say graphic designer, logo designer. We can create logos ourselves, but maybe at times you want something very specific that you cannot feed to the AI. Then you will need somebody. Okay, this is the logo that I have, but I need this line to be maybe थोड़ा sharper, थोड़ा thinner. उस टाइप का काम करने के लिए you will still need a बट क्या पता डाउन द लाइन आफ्टर 3-4 years 5 years वो चीज भी इतने एक्सपर्ट लेवल पे चले जाए बाय एआई की आपको उसकी भी जरूरत ना पड़े. Quite possible. राइट. सो एआई की जॉब्स कहीं से शिफ्ट हो कहीं और जाएंगी. आपको वो शिफ्ट को पहले देखना है बिफोर इट हैपेंस, एंड देन यू हैव टू गो विद द शिफ्ट. ये अभी कुछ दिन पहले हॉलीवुड में स्ट्राइक था. Writers guild strike. I mean, they had other demands also, like wage, whatever. You go in charge. One of the demands was that his studios generative AI use not करें. With जब ये या फिर down models. I believe that there was a stupid demand. ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी तो है, and just to save your job, you are saying कि आप इस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करो.
बट सी यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप अपने बारे में सोचते हो उसमें बुराई क्या है अभी के लिए। आई नो आप लार्ज मॉडल पे देख सोचते हो तो आप बोलते हो कि हाँ इट्स गुड यू कैन गो विद द फ्लो, बट यू जस्ट इमेजिन आप सो रहे हो रात में शाम में एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि शिट यार ये चीज़ अगर आ गई तो मेरी तो जॉब चली जाएगी, दैट्स माई ब्रेड एंड बटर, सो हाउ आई एम गोना सर्वाइव। अगर किसी की फैमिली से एसोसिएटेड है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। I understand that, but like I said, the world doesn't run on empathy. The world runs on profit. So as much as you can feel for them, which can even happen to you and me. Yeah. Right? As much as you can feel for them, you cannot run the world on just empathy. You have to, अगर मान लो चलो स्टूडियो उनका डिमांड था कि AI यूज ना हो, जनरेटिव AI यूज ना हो, ठीक है, चलो मान लो स्टूडियोज ने मांग दिया कि हम ना यूज करेंगे, these are risky leaps according to studios. राइट, Can you guarantee कि कोई नहीं करेगा यूज? No. गारंटी तो किसी नहीं यार। चीज की नहीं है ना। कुछ समय पहले तक नेटफ्लिक्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, सिर्फ मूवीज थे और टीवी था। सिंगल थिएटर थे, फिर हाँ। मल्टीप्लेक्स आए, तो- फिर अभी OTT की धूम है। मोस्ट ऑफ द मूवीज स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम सब OTT पे रिलीज हो रहे थे, हाँ, राइट? so OTT क्या था? OTT like Netflix is starting one, they will do that. Right. That was the first one. So अगर ये बिग स्टूडियोज मान लीजिए AI यूज नहीं करते हैं, कोई और यूज करेगा, ठीक है? अब जो कोई और यूज करेगा, अब बिग स्टूडियो जब मूवीज बनाएंगे, नाउ दे आर सपोज टू नॉट यूज AI, एवरीथिंग शुड बी ह्यूमन ड्रिवन, उनका कॉस्ट ऑफ मेकिंग द मूवी विल बी मच हायर देन the other person, other maybe smaller studio or maybe a studio from a different country जहाँ पे कि ये बवाल नहीं हुआ, ये Bollywood, maybe Chinese movies industry, जहाँ ये बवाल नहीं है, वहाँ की Industry, local studios industry. they were able to make the same kind of movie on a much smaller budget because now they are using AI. With a great impact. Yes, so उनकी मूवी जब जाएगी, आपकी मूवी जिसका कॉस्ट ज्यादा है, इसकी यहाँ मूवीज का कॉस्ट कम है, they will go to the same market because देखने वाले the same लोग हैं. Exactly. So for the same amount of people going to theaters, this movie will make much bigger profit. Like loss भी होगा तो कम loss होगा. कम loss होगा. इसका सब कुछ ज्यादा है. इसको प्रॉफिट करने के लिए ज्यादा है, पहले कमाना Just पड़ेगा. to meet with the But slowly- expectation and the basic margin also उनका higher range But होगा. slowly this industry will follow. This industry will rise. जबकि ये यूज कर रहा है. तभी भी जॉब कहाँ है? तभी तो जॉब गई. Leave alone. These studios are not stupid. They will never agree to these concepts. ठीक है? If they are forced to, they will simply take their shop to somewhere else. Okay. आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे रह के ही मूवी बनाना है. Right, right. You can, I mean, that's how things are. Like, maybe companies operate in one country. Like even you will find Indian IT companies जो कि actually India based है, US companies जो कि US based है, लेकिन उसका headquarter किसी और country में है. Right. For tax. Yes. That's how it is. अगर उनको लगे कि हमको प्रॉब्लम आ रहा है इस जहाँ पे कर रहे Then what will pay or they will take their business somewhere else. They will make they will shoot their movies somewhere else. They will release in US. तो टेक्नोलॉजी को we cannot really hold. आज तो अगर होल्ड कर भी लेते हैं ना, there are so many big companies. There are examples हैं Kodak. It registered digital cameras because उसका main business was film. हमारा बचपन हमारी यादें हैं कितने Kodak Kodak was the gold standard. Exactly. कैमरा हो तो Kodak हो. Exactly. और उसमें हम फिल्म खरीद के एक फोटो लेते थे. Reels की वो studio पहले वो जाती फिल्म थी. पूरा कंप्लीट होगा. हाँ, yeah. जितने उसमें फिल्म होंगे. Exactly, reel, yeah. और फिर हम उसको करेंगे प्रोसेस एंड देन वी विल सी कैसा आया हमारा फोटो. हाँ, yeah. ठीक है? And then वो आती थी photos from the studio and then we used to buy big albums उसमें लगेंगे photos and Yeah. अभी तक वो चीजें देख के you know nostalgia. Yeah, nowadays we hardly ever print anything. Exactly. हमारी फोटोज हमारे फोल्डर में है. I know we hardly ever go, but that's a different story. The Right. story of Kodak is that, from what I know, it was their employee who came with the first camera that was digital technology. उनको लगा कि ये तो हमारा ही बिजनेस खा जाएगा. हमारा बिजनेस तो फिल्म का है. Right. मेन बिजनेस. कैमरा को उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता. बट फिल्म वाज अ रिकरिंग कॉस्ट किसी आदमी के लिए बार बार खरीदना है वो. They were like नहीं ये न्यू टेक्नोलॉजी हमको नहीं चाहिए. I'm not sure they fired the guy or the guy himself left.
बट उस कोडैक ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं किया यूटिलाइज। सो एक्सेप्ट नहीं भी किया और ऊपर से उसको फायर भी कर दिया। आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट या तो उसको फायर किया होगा या तो वो कुछ छोड़ दिया कि Okay. ठीक है भाई मुझे यहाँ पे इनोवेशन का मौका नहीं मिल रहा अगली। इट वेंट टू अनदर कंपनी, आई थिंक सैमसंग, बट कोई भी कंपनी, आई मीन इट डजंट मैटर, इट वेंट टू अनदर कंपनी। They saw opportunity. उनके पास they were not the market leader like Kodak. फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा कोडेक से आ रहा है। हाँ, एक तो with the great ideas. they're coming with the new technology. Right. क्योंकि they knew कि मार्केट में कोई यूज नहीं कर रहा। हाँ, हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। When is Kodak now? I think Kodak filed for bankruptcy sometime back. अभी आ रहा है। I mean, nobody They uses do- camera mostly. Yeah, Like they do some business. You will find some print shops, mall वगैरह में Kodak वगैरह, but they are moving. They are not there. Same with Nokia. Nokia was the gold standard of phones. What was Samsung? nothing. I mean, Samsung के फोन थे, but nobody Exactly. bothered with Samsung and क्या है, Nokia होना चाहिए, right? Exactly. Apple आया, iPhone लेके आया, उसके बदले में गूगल ने एंड्रॉइड निकाला, सैमसंग ने जंप रेट कि चलो मेरे को ओएस तो मिल रहा है काम करने के लिए, मैं अपना डिवाइस बनाऊंगा, ये ओएस चिपकाऊंगा, लेकिन फ्री का ओएस था, Right. गूगल वाज नॉट चार्जिंग फॉर इट, अभी भी नहीं करता है। सैमसंग ने लिया, और भी कंपनीज ने लिया, HTC वो आने का वो है, बट बहुत सारी कंपनीज ने उसको हाथों हाथ लिया। दिस इज द अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कि मेरे को ओएस मिल रहा है बना बनाया, वो भी गूगल से, मेरे को सिर्फ बनाना है हार्डवेयर, उसको ओएस को चिपकाना है, एंड आई विल बी एबल टू कम्पीट विद आईफोन। जो क्या होगा कि नहीं, हमको इस मार्केट के राजा हो। Windows, हाँ, Microsoft. पहले दे चाहे भी their own OS, कि हम अपना OS बनाएंगे। Right. They didn't want to give any leverage to Google कि हम, कि Google obviously gives free में अगर OS, they have some leverage Right, आपके ऊपर, right. ठीक है? So they were like नहीं, हम तो नहीं करेंगे। बाकी कंपनीज ने किया। Samsung suddenly out of nowhere they became the leader in the Android market of phones. Not of course iPhone is the another OS. Nokia was like नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर हुआ कि उनका OS चला नहीं, it was very buggy. Then they tied up with another user, Microsoft. उस समय, at least in that stage, Microsoft is not a user in general, but in phone OS it was a user. Right, right. And Microsoft also tried very hard to be different because both Android and iOS looked similar. Icons click करो खुलेगा, नीचे में similar buttons हैं. Basic features were same. Yeah. You can say Android in general is a copy of iOS. I mean, at least starting with. Okay. Obviously, they have evolved and they have. But so Windows tried really hard to look different because they came up with the styles. उनका live styles, their OS looked very different. Okay? But they came late. They came so late to the party. कि already market was either Android or iOS. And this whole phone का जो business था, it was about apps. जिसके पास ज़्यादा apps हैं, वहाँ पर लोग जाएंगे। Because आप जब फोन आता है, it comes with basic functionality. और जितने भी additional functionality हैं, वो आते हैं ऐप से। Microsoft tried so hard. They even gave money to developers to build the same app कि उन्होंने बनाया iOS Android के लिए, to build it for But Windows नहीं हो OS. पाया। नहीं हो पाया because it has to be organic. वो बनाते तब हैं जब अगर उनको दिखेगा कि हाँ already base है उनका ऐप यूज करने के लिए। जब बेस ही नहीं था तो वो बना भी नहीं रहे थे, और बिकॉज वो बना नहीं रहे थे एप्स तो लोग आ नहीं रहे थे, it was like clash of the two. ठीक है, so Nokia and Windows came together, two losers together, and they both failed. They both failed very badly. ये सोच के कि हम विनिंग टीम बना Yeah, they both eventually Nokia को बिठा पड़ा। आज भी Nokia कंपनी है, it got sold. There are some ex-employees, I think they took the name. They bought the rights of the name and now they are making phones, Nokia phones, which are by the way now Android. Right. But they are nowhere, right? They resisted that change. अगर मार्केट में कुछ नया आया है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, adopt it. Because if you, अगर आप नहीं करोगे कोई और करेगा, they will get ahead of you. BlackBerry, where is it? Nowhere. BlackBerry was the style for statement every for the business customer. person. Exactly. That is what it was. They tried the same thing. Right. They did not take Android. They wanted to have their own. उस टाइम पे काइंड ऑफ ऑरा हुआ करता था BlackBerry, if you are a BlackBerry owner, you are like hotshot in business, Yeah, right? right. And no. वो चला गया. एग्जैक्टली So all these businesses which resisted change, they got destroyed. So as a human, if you resist this
a new AI revolution, you will get destroyed. You have to find a way to use it. That फ्यूचर में दो टाइप के लोग होंगे, एक जो AI यूज करते हैं इफेक्टिवली अपने काम के लिए, एंड दूसरा जो AI बना रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको और बेटर कर रहे हैं. ये दो टाइप के लोग होंगे. थर्ड टाइप के लोग वो होंगे जो उसको कंज्यूम करेंगे. हाँ, कंज्यूम या एंड हम सही यूज इससे उसको यूज कर रहे हैं इधर में, उनको इफेक्टिवली यूज करना आता है AI को अपने काम को करने के लिए बेटर. वो टाइप के लोग हैं. थर्ड टाइप के लोग वही होंगे जो कि डिजिटल वर्ल्ड से अलग है. Like, for example, if you are a makeup artist, right? You are not impacted by AI because AI cannot do makeup because it's a physical work. जहाँ पे physical work है, अगर कोई मजदूर. Okay, fair enough. उसमें भी AI कहीं ना, I'm not sure AI, but lot of filtration भी तो होता है. Like you just without makeup you sit in front of the camera. Right, and वो आपको फिल्टर करके आइडेंटिफाई करता है. So somewhere वो हाँ वो है, but in general देखो वो डिजिटल लाइट है, but as a person if you go and meet somebody you still want to look good in person. अगर आप शादी में जा रहे हैं, आपकी शादी है, you would still want a makeup artist to do your makeup because वहाँ पे वो डिजिटल काम नहीं करेगा. I mean वो करेगा वीडियो में, लेकिन जो आपको फिजिकली देख रहा है उसके लिए you have to look good, right? So makeup artist is a one kind of job where I believe AI is not going to come anytime soon. Maybe कभी robotics इतना हो जाए एडवांस कि आपको ब्रश कर दे. Other kinds of job like labor kind of job, यहाँ पे human labor करता हूँ. Like मजदूर वाला job वाला AI will not put bricks, right? वो ईंटों को जो लगाना है वो human ही करेगा. Maybe future में after 10 years robots इतने हो जाएंगे एडवांस कि they can do this. बट दोज जॉब्स जहाँ पे की फिजिकल जॉब है, जहाँ ऐसा कोई जॉब जो कि डेटा जनरेट नहीं करता है, दैट जॉब विल नॉट बी इम्पैक्टेड. अगर आपका जो एक्टिविटी है वो डेटा करता है जनरेट बैकग्राउंड में, फ्रंट एंड में, इट विल बी इम्पैक्टेड एंड यू विल नो एग्जैक्टली कि कब वो करता है जनरेट. वो पीपल थिंकिंग में इसलिए क्या होगा जनरेट, एक्चुअली होगा डेटा जनरेट बहुत सारी चीजें होता है. When you make a call to somebody for a sales call, there is a data behind it because they are recording your voice call. Right. So अगर आप completely cut off हैं डिजिटल वर्ल्ड से, एटलीस्ट आपके काम में, भले आप ऐसे फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, बट आपका जो काम है that is not dependent on digital world. आप डेटा जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपका काम स्टेप है. You can maybe at least for the next 5-10 years you can be where you are, you can survive with your skills right now. बट अगर आपका जॉब ऐसा है जो कि डेटा जनरेट कर सकता है, इट विल गेट इम्पैक्टेड. सो यू नीड टू थिंक नाउ कि about your future. how to future proof your work. There will be some changes for sure. And we cannot, I mean this is tsunami, it will come eventually. So एक बार tsunami आ चुकी है, then you have to plan. अब कितना भी बड़ा लगा लो उसका क्या बैरियर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा. अब एक टाइम में ओवरफ्लो हो जाएगा आपके पास. Governments cannot stop it. You doing a strike will not stop it. You protesting, like artists are protesting. There are painters are also protesting because AI artists. I mean, AI is so good at art now. It's very difficult to know किसने कौन सा AI बनाया है, कौन सा किसी actual human ने paint किया है. Right? Some I read like just after that interview of India came. Some art competition was won by an AI generated art. Oh. They couldn't even figure out कि ये आदमी ने बनाया है. So as an artist you can protest, but I feel for you. I can feel the anxiety जो आपको इतने सालों से आप उसमें स्किल हो, that's what you do. Exactly. I understand that. Yeah. But the truth is मेरे अंडरस्टैंड करने से, लोगों के अंडरस्टैंड करने से, लोगों का एम्पैथी फील करने से कुछ नहीं होगा. This is where the world is going. Now, if you're an artist, maybe you understand art more than the guys who are generating AI. Start using AI, generate something with it. आप भी यूज करें उसको. A talk and good. Yeah. Yes. So I think the crux of the matter is AI आ गया है, आगे और आएगा, और एडवांस AI आएगा. घर में बैठ के क्लिक करने का कुछ कोई फायदा नहीं है, ढूंढने का भी फायदा नहीं है कि AI
Also, you shouldn't just sit quietly. हाँ, अभी AI आ गया तो अपन का life easy है. If it is actually making your job easier now, future में it will take away the job because it's getting better at it. So अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना भी स्टार्ट करो and think कि next इंटरव्यू में पूछते हैं ना कि where do you see next 5 years? So That question will follow it. Yeah. But that job may not stay in the next 5 years. Exactly. Yeah. So you have to just prepare yourself for the next 5 years. ठीक कहाँ पे जा सकते हो? हर इंडस्ट्री का अपना अलग एक पाथ होगा. I sitting here cannot give ज्ञान on every field कि वो कहाँ जाएगा. I can only think about maybe my field and I can only guess to some extent कि कहाँ जाएगा. So every person needs to sit, give it a thought कि क्या करना चाहिए उसको अपनी जॉब को या फिर अपग्रेड करने के लिए. Yeah, you have to upgrade yourself. जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं अपग्रेड 2.2, 3.8. Human should now upgrade 2.0 because the AI is coming. Okay. Fair enough, guys. हमने actually बहुत लंबी मैं कॉफी पिया ओके सो हमने अच्छी खासी डिटेल बातचीत की एंड इट वाज नाइस. ऐसे तो हम लोग बैक कैमरा इन जनरल लाइफ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत बकवास करते हैं, इवन यू कांट इमेजिन. बट या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज लिटिल डिफरेंट, लिटिल ऑकवर्ड टू बी ऑनेस्ट. एंड वहाँ हमें देखना भी पड़ता है कितनी लंबी एपिसोड ना बन जाए कि लोग ही बोर हो जाए. सो समय का भी ध्यान रखना पड़ता है. सो ओके, ये हमारा पहला एपिसोड है एंड आई होप गाइज आपको पसंद आएगा. एंड प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए. हम आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, आप एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं. एंड आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कीजिए कि आप कौन से टाइप के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं. डेफिनेटली हम उस पर और बकैती करेंगे. हम आई हैं बकैती करने. सो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. Bye.